Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. We are going to understand about the basic relationship between statistics and economics, right? So when we study the basic problems facing a country, like there are many basic problems as you can see, like a poverty, right? Like inequalities of income. So there are many problems that always economics questions all these problems, right? And we want to know about how this been created. Poverty कैसे हो जाती है, inequalities of income कैसे हो जाते हैं. So this economic facts, if you want to express this, right, then we need to express in terms of statistics. हमको उसको बयां करना है, उसको बताना है, तो हमको statistics की मदद चाहिए. Remember, such economic facts are called economic data. ऐसे economic facts को हम economic data बोलते हैं. And let's say we have a statement like this: the production of the rice in India has increased from 89.14 million tons in 2010 to 11.1 million tons in 1718. Now, what is this? This is a quantitative data, or this is a statistical data, right? That we are understanding in here, right? This is what it means. So, in addition to the quantitative data, economics also uses qualitative data. इतना ही नहीं है कि वो quantitative data use करेगा. It can also use the qualitative data. The chief characteristics of such information is that they describe attributes of a single person or a group of person. That is important, right? So it doesn't express. Just a minute, hold on. Sorry, there was too much noise, and that is why I just shut down. Fine. So, what we are understanding is that हमको जो data मिलता है वो quantitative data मिलता है, right? And that quantitative data is important in economics. Economics में qualitative data भी मिलता है. We find the qualitative data also in economics, right? But उसका बहुत importance ज़्यादा नहीं है. अगर हमको qualitative data अगर हमको economics में use भी करना है, then we need to convert that into quantitative data first. The chief characteristics of such information is that they describe attributes, right? याद रखिए, quantitative data आपको क्या देता है? Facts देता है. They provide the facts, whereas this provides what? Qualitative data, attributes. Attributes are like they are not going to give in numbers. They're just going to give the quality, or you can say the characteristics of the quality, right? Like for example, जैसे कि अगर हमको information चाहिए एक person की, right? Take for example, in terms of degrees, right? तो हम बोल सकते हैं कि better है, worse है, sick है, healthy है, या more healthy है, या हम बोल सकते हैं unskilled है, skilled है, highly skilled है. So we can term in different degrees, right? वो कितना skilled है, right? In different degrees we can say. Such quantitative information or statistics is often used in economics, और ये ऐसी ही चीज economics में use होती है, right? या फिर other social science में use होती है, right? Now this is very important कि quantitative data का limited purpose of use है, जबकि quantitative data अगर हम देखने जाए तो उसका use बहुत ज़्यादा है, because it can be expressed in different ways, अलग तरीके से कर सकते हैं. याद रखिए, economics and other social scientists, right? मैंने जैसे बताया कि क्वांटिटेटिव डेटा इतना यूज नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव डेटा ज्यादा यूज करता है इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंस. कोई भी सोशल साइंस आप देख लो, जैसे कि प्राइसेस है, इनकम्स है, टैक्सेस पेड है, राइट? वेदर वो सिंगल लोग की हो या ग्रुप ऑफ पीपल की हो, इट ऑलवेज ट्राई टू यूज क्वांटिटेटिव डेटा इन नंबर्स.
Now, the purpose of collection of data about these economic problems is to understand and explain the problems. हमको चाहिए क्यों ये सब डेटा, क्योंकि हम समझ सके एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, राइट. दिस इज व्हाट वी नीडेड, जिससे हमको ये पता चल सके कि जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, इज वन प्रॉब्लम, या फिर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल इज अनदर प्रॉब्लम, राइट, या फिर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी. ये जो भी प्रॉब्लम्स है बड़े बड़े, दैट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ economics. So economics try to solve, but how it can try to solve? उनके पास भी कुछ हाथ में चाहिए, right? So what purpose does analysis of poverty serve unless we are able to find out ways to mitigate them? जब तक हम तरीके नहीं अपनाएंगे उसको यूज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में, there is no meaning of economics. So इसीलिए इन इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की मदद से measures लिए जाते हैं, right? याद रखिए, we may therefore also try to find the measures to help solve the current problem. और यही measures को क्या बोलते हैं हम? Policies. We call them policies. So we know now what is policy, right? And how the government devises the policy, how a business devises their policies. They take the help from statistics, वो help लेते हैं statistics से, और economics से use करते हैं उसके अंदर, and then they devise the policy. No analysis in economics problem would be possible without data. याद रखिए, information या data या facts के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते economics. In economics, we all need data, numbers, numbers, and numbers. So on various factors underlying an economic problem. So बहुत सारे problems होते हैं economic में, जिसके लिए data चाहिए, information चाहिए, या फिर मैं बोलूँ सरल भाषा में, easy language में, तो numbers चाहिए हमको. And that in situation, no policy is formulated to solve them. जब तक ये नहीं मिलेगा हमको, कोई पॉलिसी इसको सॉल्व नहीं कर सकती. और यही सबसे बेसिक रिलेशनशिप है किसका? इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का. समझ में आ रहा है सबको? यस, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. In the starting of the chapters, you will find a little bit more theory, right? Because the very first 4 chapters are such. Then slowly you will take interest in the statistics. जिनको practical subject पसंद है, तो उनको पसंद आएगा. Why? Because mean, median, mode, mean deviation, standard deviation, and all that things are going to start. Then only sums and sums are going to start. Remember, in the final examination, the weightage of the theory is very less. But in the starting, the PT1 examination, a little bit weightage would be there of theory. Clear hai? But rest assured, I am going to give you the basic question that you need to learn. You don't need to learn each and everything, right? पर आप सिर्फ पढ़ लो. जो learn करना है उसका basic question मैं आपको दे दूंगा. Okay? Let's understand. Scope of statistics. What is the scope? इसका व्याप क्या है? कहाँ तक फैला हुआ है? So the very first scope is collection. So ये जो है ना statistics का जो definition है, जिसके अंदर बताया गया है, it's a collection, organizing, presentation, analysis, interpretation of numerical data. तो वही उसका scope है. तो हम देखेंगे collection, organization, presentation, analysis and interpretation. वही उसकी definition है, वही उसका scope है. तो अगर आपको definition याद रह जाती है, right? Statistics की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इज अ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, पहले कलेक्ट करते हैं, बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं, देन प्रेजेंट, इसका एनालिसिस करते हैं, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. वो इसकी डेफिनेशन है. और डेफिनेशन के अगर ये वर्ड याद रह गए आपको सीक्वेंस में, तो वही उसका स्कोप है. सो स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है एक्चुअल में? अगर हम पहले देखें तो एन्यूमरेटर जो होते हैं, यानी जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो पहले कलेक्ट करते हैं डेटा. wherever they get data they can collect it, right? और यही सबसे बड़ा फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का. तो डेटा कलेक्ट किए बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते विदाउट कलेक्शन ऑफ द डेटा, राइट? तो वेरियस सोर्सेस से आपको डेटा मिलते हैं, जिससे आपको साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम का. आर यू गेटिंग दिस? सो कलेक्शन. सेकंड, यू ऑर्गेनाइज द डेटा, राइट? सो कलेक्शन ऑफ डेटा पे चैप्टर है पूरा, राइट? देन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन पे भी चैप्टर है.
तो ये तीन जो पहले जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई मीन द स्कोप है, उस पे आपको चैप्टर्स मिलेंगे। तो ये कलेक्शन कैसे किया जाएगा हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। दैट इज व्हाट यू गेट टू लर्न। सो सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन डेटा? उसका मतलब होता है कि यू आर अरेंजिंग एंड क्लासिफाइंग द थिंग्स इनटू ग्रुप्स, टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल यू गेट अ लाइक मीन द डेटा ऑन लेट्स से द कस्टमर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। हमने आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाई है कुछ, और आप कस्टमर्स का आपको डेटा मिला है, कितने सारे कस्टमर्स हैं। नाउ व्हाट यू डू आफ्टर दैट, you divide into groups. Either you divide into the group of let's say how much the income they are earning, वो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो कि कौन से एरिया में रहते हैं वो, right? So depend on what the data you have, you divide into groups, and the dividing of the into groups as per your knowledge, as per your understanding, this is what we call organization of data। उसी को हम वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज। डेटा को क्लासिफाई करना, टुकड़ों में डिवाइड करना। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लासिफाई द रॉ डेटा एंड ब्रिंग ऑर्डर, सिस्टमेटिकली रखना, राइट, जिससे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सके। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। अब इसमें भी एक चैप्टर है जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि आप बार डायग्राम्स, पाई चार्ट, वो सब ड्रॉ करोगे ग्राफ बुक में, तो उस टाइम आपको ग्राफ बुक का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है, सो व्हेन यू कलेक्ट इट, आपको डेटा में टेबुलेट भी कर दिया, तो नाउ यू गोइंग टू प्रेजेंट इट, आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। अब प्रेजेंटेशन बहुत तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेबुलर प्रेजेंटेशन, यानी टेबल में प्रेजेंट करना है, सो टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। डायग्रामेटिक यानी ग्राफ, कर्व, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पाई चार्ट वो बनाना, दैट इज डायग्रामेटिक, राइट। ये किसके लिए, व्हाई दिस? See, this is because that you can comprehend यानी समझ सकते हो आप डेटा को तुरंत ही, विद इन अ सेकेंड, जस्ट विद अ ग्लैंस, आप एक नजर लगा के भी ये डेटा को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। दिस इज व्हाई द प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आता है एनालिसिस, जो हम पूरे यानी आफ्टर फोर्थ फिफ्थ चैप्टर हम पूरे साल यही पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारा मेन पार्ट एनालिसिस ही है, राइट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वी फाइंड मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी मीन, मीडियन, मोड, अलग अलग तरह के एवरेजेस है, उसके वेरिएंसेस है, उसके स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो सब फाइंड करेंगे। सो दिस आर स्टैटिस्टिकल टूल्स बेसिकली। ये और कुछ नहीं है पर एक तरह के औजार है जिससे हम समझ सके एनालिसिस करके कि एक्चुअली ये डेटा है क्या, right? What it tries to say to us, what it tries to tell us. There is one wonderful book, एक बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आप फ्री टाइम हो आपके पास, घर पे ऐसे ही बैठे हो कभी और बुक पढ़नी हो, तो there is a book called Factfulness, right? Wonderful book on statistics. तो स्टैटिस्टिक्स डेटा को कैसे एनालिसिस किया है, उसका इंटरप्रिटेशन, जो नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट पॉइंट जो हमारा इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। क्योंकि ये बुक जो है फैक्टफुलनेस, वो वो बिल गेट्स ने यूएस में हर एक कॉलेजेस में, बिकॉज एट दिस एज यू आर इन जूनियर कॉलेज, यू आर लाइक ए जूनियर कॉलेज स्टूडेंट, राइट। सो उन्होंने कॉलेज में ये बुक फ्री में बच्चों को दी, दिस बुक फैक्टफुलनेस, बिल गेट्स ने। Now this is one of the wonderful book that I found over the years, जो डेटा को कैसे प्रेजेंट करता है और इंटरप्रेट करता है, and many things you get to know from this. So those who like to read books a little bit here and there, or those who like to study, they can go with this, right? This book, you can buy that, and it's available on the internet. I mean, on the Amazon or something like that. So you can search for that. So what's the book name? Factfulness. Shall I write it in the chat box? Yes, yes, sir. I have one digital copy for that also, right? And definitely, if you want digital copy, I'll share, right, in a group. Just go through it. I don't know the quality of the digital copy would be how much good or how much bad. I've not seen that because I have one book at home, right? A proper book. You might have seen कि मेरे घर पे library है पीछे, the entire. So there's one book called Factfulness. Anytime when I'll be sitting over there, you just ask me to show that book. I'll show you. And definitely, if you want to read or you want to go through the book, I'll share you the PDF copy. Diksha, right? You buy it Yes, afterwards. sir. Thank you.
think that you want to buy, then you can buy. Because I don't think so. It's good to read online digitally all the time, right? Anyone is using Kindle? I mean, Kindle e-reader book. Do you know anyone about the Kindle? Very good, Diksha. So, what you can do, beta, just send me a Kindle mail, right? If you are using it. So, what I can do, I can deliver to your Kindle itself. Directly, आपको Kindle में आ जाएगी वो book, digital, Okay, sir. right? So, share me your email, Kindle email, हाँ? आपका पर्सनल ईमेल नहीं, Kindle का ईमेल आता है, आपको पता है? So, just share it with me. Yes, sir. Right? So, you'll get that book delivered to your Kindle Yes, only. sir. So I have my Kindle. Okay, sir. Right? Even I am a avid reader, so I like books. So मेरे पास Kindle है. So if anyone need any type of book, right? Mostly nowadays all the books are available free of cost and online. So अगर आपको बुक का शौक है, तो मैं तो यही बोलता हूँ आपको कि buy a Kindle. Kindle e-reader बाय कर लो, इसके अंदर हर एक चीज आ सकती है, यानी पीडीएफ एंड एवरीथिंग आ सकता है. हाँ, आपको बेसिक वर्जन मिलता है, 8,000 रुपीज से स्टार्ट होता है उसका, 8,000, 11,000, एंड देन इट गोज अप टू 29,000 ऑल्सो, 30,000 ऑल्सो. Fine. Let's come. So what I'm talking about factfulness, that book, right? That book interprets the data of the world in a different way, right? And इसने books लिखने वाले हैं Roslings, Hans and Ola Roslings, and wonderful books they have written. So this is the last stage of statistical investigation, and we need to interpret. Now, when we interpret, का मतलब क्या होता है? We try to find out the conclusions. We try to find out the meaning of the data, right? So whatever data I've collected and analyzed, we need to understand. That is what we call as interpretation, right? So interpretation of data is difficult. क्यों? क्योंकि अगर आपको डेटा को समझना है तो it takes time, right? It's not like that you are getting the data and just you are understanding it. If you're getting a lot of things in your hand, right? बहुत सारे marks या बहुत सारे weight या height, you need to understand कि इसका मतलब क्या होता है. Then it takes time to understand. The interpretation of data is a difficult and task. और इसके लिए आपको क्या चाहिए? हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज चाहिए, यानी बहुत टाइम अगर आपने ऐसे डेटा देखा हो, then only you get to know. It is not an easy task. So interpretation is not going to be there in our topic. हमारे पूरे चैप्टर्स में नहीं है, सिर्फ समझना है कि this is the last task of the statistics. Okay, they try to interpret, right? आज ही मैंने ये एग्जांपल दिया था, right? That statistical methods are no substitute of common sense, right? And everyone need to understand this. These famous words are told by the great economist Milton Friedman. He says that statistics is good, right? But it's not always a good. And there are no substitutes for common sense. अगर common sense अगर आपकी बोलती है कुछ otherwise, then you have to follow common sense first. Statistics afterwards. So common sense पहले आती है. अगर आप कोई भी चीज अगर आप देखो तो common sense से देखना चालू करो, statistics से नहीं. आपको अच्छा लगता है स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी कुछ चीज करके, मीन, मीडियन, मोड एंड एवरीथिंग दैट यू फाइंड इट, ओह हमने क्या निकाल लिया इतना सारा डेटा में से. बट इट इज नॉट एवरीथिंग. It is something, it is something, it's not everything. So there's an interesting story which told to make fun of statistics, right? And this story has been given by also Milton Friedman, let me tell you. It is said that a family of 4 persons, husband, wife and 2 children, once set out to cross a river. एक बार गए रिवर को क्रॉस करने के लिए, राइट? एंड उन्होंने देखा कि रिवर है, बहुत ब्रेथ बहुत है उसकी, सो वी नीड टू क्रॉस इट एनी हाउ इफ यू वांट टू गो ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. सो द फादर न्यू द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर. फादर को पता था कि एवरेज डेप्थ कितनी है, एवरेज डेप्थ. नाउ दिस वर्ड इज अ बिट कंफ्यूजिंग, राइट? He doesn't know the exact depth, but he knows the average depth. Right? Now, what does average depth means? Right? And let's say the average depth of this river is, let's say, 4 feet. Right? तो समझ लो कि रिवर का एक बैंक है and this is river का other बैंक है. The family is at this side. एक family है यहाँ पे, right? मम्मी पापा and 2 children, let's say. And ये बैंक में से उनको ये बैंक की तरफ जाना है. They want to go towards this bank.
राइट, ये बैंक से. So now the father knows it. The average depth is 4 feet. So, but how the 4 feet means? कि कहीं पे रिवर शैलो होगी, कहीं पे बहुत डीप होगी, राइट, कहीं पे वापस शैलो होगी, वापस एकदम शैलो होगी. सो एवरेज डेप्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय दैट? इट मींस इफ यू रिवर को क्रॉस सेक्शन से अगर हम देखें तो रिवर कहीं ना कहीं 1 फीट की भी हो सकती है, कहीं 2 फीट की, कहीं 2.5 फीट की, कहीं 3 फीट की, राइट, कहीं 5.5, कहीं 6.5 या 7 फीट की भी हो सकती है डेप्थ में, राइट. सो एट एवरी डिफरेंट पॉइंट्स द डेप्थ ऑफ अ रिवर इज डिफरेंट. पर उसका एवरेज निकालोगे ना आप, तो आपको दिखेगा 4 फीट. और उसने क्या किया फादर ने बाद में सबकी हाइट भी नापी और उसका एवरेज निकाला. उसने कहा 4.8 फीट सबकी हाइट है. तो फादर को लगा कि हमारी एवरेज हाइट 4.8 फीट है, रिवर की एवरेज हाइट 4 फीट है, क्या हम क्रॉस कर सकते हैं रिवर? एक्चुअली फादर को लगा कि ये हाँ क्रॉस कर सकते हैं, बट एक्चुअली नहीं. बिकॉज अगर हम बच्चे की हाइट देखिए, एवरेज उनकी 4.8 फीट है. बच्चे की हाइट कितनी होगी? हार्डली 2 फीट, 1.5 फीट और समथिंग लाइक दैट. मे बी फादर की हाइट हो सकती है 6-6.5 फीट, राइट. बट अगर देखें उनके बच्चों की हाइट तो कितनी है, तो अगर वो जाएंगे क्रॉस करेंगे रिवर, क्या वो क्रॉस कर पाएंगे रिवर को? व्हाट डू यू थिंक? यस? Shall No, we? sir. No. Why? No, Why? Right? Why? Because भले वो एवरेज डेप्थ है, वो तो एवरेज डेप्थ 4 फीट दिखाई है, पर एक्चुअली कितना होगा? मे बी कहीं ना कहीं 6 फुट, 6.5 फीट, 7 फीट भी हो सकता है. तो बच्चे डूब ही जाएंगे, इवन उसके वाइफ भी डूब जाएंगे. और अगर सक्सेस हुआ तो फादर शायद किनारे पे आ सकते हैं. सो उसके बाद उसने क्या किया, वो बोलते हैं कि दे कैलकुलेट एवरेज हाइट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स. और उसको लगा कि एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली मेंबर्स वाज ग्रेटर देन एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर. ही थॉट दैट ही कुड क्रॉस सेफली. और कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, जब वो क्रॉस करने गए तो बच्चे और सब ड्राउन हो गए रिवर में, राइट. तो क्या यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का लाई है? डज द फॉल्ट लाई विद द स्टैटिस्टिकल मेथड? नहीं, ये फादर के कॉमन सेंस का लाई है. स्टैटिस्टिकल मेथड तो बता रही है, बट यहाँ पे हमको कॉमन सेंस को पहले यूज करना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स को नहीं. एक स्टेटमेंट है जो बोलते हैं, राइट, दे आर लाइज, झूठ, देन दे आर व्हाइट लाइज, सफेद झूठ, एंड देन देयर इज स्टैटिस्टिक्स. उससे बाद आता है स्टैटिस्टिक्स. इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स सबसे ऊपर का झूठ है. अगर किसी को कन्विंस करना हो आपके फ्रेंड को कोई भी चीज से, तो जस्ट गो एंड गिव देम एनी स्टैटिस्टिकल नंबर्स, वो कन्विंस हो जाएंगे, ओहो ऐसा भी है. सो वो बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिकल फिगर्स बोलते हैं ना, तो लोगों को झूठ भी सच लगने लगता है. समझ में आ रहा है? So remember, it is not a common substitute for a common sense. Uh, shall we go with the functions? It's 2:43. Okay, fine. Let me go brief in the functions and then I'll stop. So what are the basic functions of statistics? It presents the facts in a definite form. पहले तो आपको facts proper दिखाता है, right? Statistics का function क्या है? क्या करता क्या है statistics? राइट. तो एग्जैक्ट फैक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेग फैक्ट्स से. हमको किसी को भी एग्जैक्ट फैक्ट्स पसंद आते हैं, वेग फैक्ट्स नहीं पसंद आते. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इन 2017 वाज हायर देन इन 2009 एंड 10. 17 में जो राइस का प्रोडक्शन हुआ वो बढ़ा, किससे? 9-10 के मुकाबले. पर ये आधा सत्य है, यानी इट इज नॉट गोइंग द एग्जैक्ट फैक्ट्स, राइट, वेग स्टेटमेंट है. आपको ये सवाल नहीं होगा कितना बड़ा, सर हाउ मच. So if we quantify this, then we get to know कि okay fine कि 89.14 मिलियन टन था 9-10 में, और जो बढ़ के 11.0 मिलियन टन हो गया है 17-18 में. This is how it is. Second, it helps in condensing the mass data into a few numerical measures. बहुत सारा डेटा है जिसको एक few numbers में
कंडेंस करना, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज है, जैसे कि मीन है, वेरिएंस है। तो बहुत सारा डेटा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे मार्क्स आ गए बच्चों के, आई डोंट गेट टू नो कि सबने कैसा परफॉर्म किया है। कोई मुझे पूछे, मेरा प्रिंसिपल सर मुझे पूछे कि बच्चे कैसे हैं आपके क्लास के, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ आई से, मैं ऐसा नहीं पूछा बेटर, सब बोले बेटर या नहीं किया, गॉट बेटर। So I need to say, sir, the result is 75%, the result is 80%. My children are performing very well, right? So this is what we say, the condensing एक ही फिगर मैंने बताया, मेरे क्लास में भले ही 50 बच्चे होंगे पर मैं एक ही फिगर बताया, मैंने बता दिया उसमें, and even the principal sir is satisfied with my answer, right? So this is what we are doing is we are condensing the mass data into numerical measures. और अगर आप नौकरी करोगे ना कल उठ के, तो आपको ऐसे ही बॉस मिलेंगे जो आपको पूछेंगे, डेटा पूछेंगे, इंफॉर्मेशन पूछेंगे, मे बी आप मार्केटिंग में होंगे, तो आपको वो डेटा ऐसे बताना है जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो आप सबका डेटा नहीं बताओगे, आप कंडेंस करके बताओगे, समरी बताओगे छोटा सा। Now these numerical measures help to summarize data. For example, it would be impossible to remember the incomes of all the people in a data if the number of people is very large, right? तो सबकी इनकम आप नहीं ले सकते, आप क्या कर सकते हो? What you need to do, you need to summarize it, right? आपको एक summary में बता देना है, okay fine, the income of the people in this area is, let's say, 15,000 rupees, or let's say in this area is 40,000 rupees, something like that. Function number 3, it facilitates comparison. You can compare a data of 1 year to another. It's very easy, right? So production of a rice अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 1920 में क्या हुआ एज कंपेयर टू 1890। वैसे हो सकता है कि 1920 में 120 मिलियन टन्स का राइस प्रोड्यूस हुआ और 1819 में कम हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि कोई मीनिंग बनता है, ओके फाइन, 8 मिलियन टन्स कम हुआ, 10 मिलियन टन्स कम हुआ, दैट वी फाइंड it has a prediction. You can look at the future. You can understand what the future holds, right? So many people are understanding in knowing the national income of the in the future. What is going to be? इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ने वाली है, बट ऑल नंबर्स, कितना बिलियन टन्स ऑफ क्रॉप ग्रो होगा या बिलियन ऑफ रुपीस का बिजनेस होगा, दिस इज ऑल नंबर्स। और नंबर्स का प्रेडिक्शन आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यस यू कैन डू दैट, राइट? आप फ्यूचर देख सकते हो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, चार्ट एंड ऑल। इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। बड़े बड़े प्लान्स या पॉलिसीज या फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे आने वाले हैं, क्या होने वाला है, यू कैन एबल टू जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ statistics. In other words, one must know that what expected level of consumption in 2020. हम बोलते हैं ना 2040 में ऐसा होगा, 2060 में दुनिया बर्बाद हो जाएगी. What the why we are saying all this? Because again, there's a statistics, number of pollution that is happening, the carbon emission, the Earth's temperature, greenhouse effect. ये सब numbers में अगर हम बयां करें, if we express in numbers, right, we can able to know कि क्या प्लान एंड क्या पॉलिसीज होने वाली है आने वाले समय में, राइट? सो वन मस्ट नो व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंजम्पशन इन दिस सिचुएशन। वन माइट टेक अ सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड ऑन द गेस ऑफ कंजम्पशन इन 2020, और जब तक ये सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं आएगा तब तक स्टैटिस्टिक्स का मतलब नहीं है। इफ यू वांट टू नो और इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, you need to have the knowledge of statistics, right? That's it. I'm not going to go further than this. Are you getting this? Yes.